हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। तो जमती कि मु कहतली कि हमें लाइक ओडिशा सिविल सर्विस जनरल स्टडीज मेंस रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। सो दिस इज ओडिशा सिविल सर्विस 2016 मेंस रो जनरल स्टडीज पेपर 1। तो गोटे पर गोटे क्वेश्चन हमें डिस्कस करबा इन सेपरेट वीडियोज। ओके, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर दोज who are planning to give Odisha civil service mains this year or in future years also, because like last हमें 4 to 5 years जदि क्वेश्चन आंसर करूछु तो हमर गोटे प्रॉपर आईडिया है जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तमे पेपर 1 एंड पेपर 2 रो जोडा कि कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑप्शनल पेपर छाड़ी की जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड पेपर 2 समस्त में सेम थाए 300 मार्क्स इच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तार सिलेबस देखो। ओके, बिकॉज एथरे कोन सब प्रकार जिंस पढ़ा दरकार नहीं ହେଲା। ऑप्शनल छाड़ला पर जहां जिंस बेसिकली निहाती अछि सिलेबस रे से जिंस पढ़ा दरकार। तो बेसिकली हम क्वेश्चन आंसर देखले तार गोटे प्रॉपर आईडिया है। तो इट इज स्कोप ऑफ डिस्कशन इज दैट along with the like discussion of the proper answer हम टिके अधिका भी जिंस पढ़िबा तार रिलेटेड थिंग्स, सो दैट लाइक ऊपर तळ जदी किछि भी क्वेश्चन पचारे से पाखा बाकी तो हमें आंसर कर परिबा हैला। तो देन बेस्ड ऑन द मार्क्स तुम केते मार्क्स क्वेश्चन पचार से 10 मार्क रो 15 मार्क रो 5 मार्क रो सही अनुसार तुम्हें आंसर राइट करा दरकार। ओके, जदी 10 मार्क्स अछि तो यू राइट 1 पेज मिनिमम और मैक्सिमम यू कैन से, बिकॉज़ जदी ताडो अधिक लिखो तमरो अन्य क्वेश्चन पई आंसर पई टाइम होबनी हैला। बिकॉज़ पेपर 1 पेपर 2 रे बहुत सारे क्वेश्चन पचारे तो सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नवा हेते दरकार। यू डोंट हैव टू राइट टू मच बिकॉज़ से माने माने मार्क्स तो सही पाखा बाकी देबे, बहुत अधिक देबेनी हैला। तो देयर इज गोटे 10 मार्क रो क्वेश्चन बचे तो राइट 1 पेज लाइक अराउंड 200 वर्ड्स। ओके, 5 मार्क ले हाफ पेज लिखो हैला। से अनुसार तुम गो विथ दैट थिंग ओनली हैला। जति मार्क पचार से अनुसार तुम मार्क्स देखो। 10 मार्क्स पई 1 पेज लिखो आंसर 200 वर्ड्स लाइक दैट हैला। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ए। व्हाट फैक्टर्स लेड टू द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857? तो 1857 ऑलमोस्ट एवरी ईयर से पाखा किछि ना कुछ एई टॉपिक रो किछि ना कुछ पचारे लाइक द कॉजेस और द इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। देखो किछि भी क्वेश्चन यदि थाए तारो तीनटा जिंस होई परबो किछि भी इवेंट रो कि से इवेंटटा कोन पय हला, तो कारण कोन, और से इवेंट माने से इवेंटटा जो हला सेते कोन कोन जिंस होइतला हला, आउ त से ता जोगु कोन कॉन्सिक्वेंसेस हला हला। सो एई तीनटा जिंस तुमे मन रखे दरकार। किंतु तुमे जहां पचारछि सेड लेखो, कॉजेस पचारछि, कॉन्सिक्वेंसेस पचारछि और इवेंट्स विषय पचारछि। देन एडी पचारछि कोन व्हाट फैक्टर्स लीड टू द सिपाही म्यूटिनी। तो यू हैव टू जस्ट राइट इट द कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट हला। तो द वर्ड्स में भी डिफरेंट थाई पारे किंतु द मीनिंग्स तुम बुझिया चेष्टा कर से कोन कारण पचारछि कि कॉन्सिक्वेंस पचारछि कि इवेंट विषय डिस्क्राइब करे पचारछि, से अनुसार यू हैव टू राइट हला। तुम जदी पचार 1857 विषय रे पूरा डिटेल लिखि गेलो कोन कोन इवेंट हेतिला तो तार किछि मतलब नो तुमरा आंसर माने से मार्क्स देबे नहीं। ओके, सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन 2 टाइम्स एंड आंसर लाइक दैट हला। किंतु हमें एठी जो डिस्कस करबा तो तार टिके ऊपर तळ डिस्कशन करबा हला। ओके, so causes of the revolt of 1857, so there are many causes: political, economic, cultural, social and things. So one by one we'll discuss political causes. Okay, I'll just bring the thing. Where is the spotlight? Yes. Okay, so political causes. Doctrine of lapse by Governor General Lord Dalhousie. Actually we should have written first this thing. Subsidiary alliance by Governor General Lord Wellesley हला। पॉलिटिकल कॉजेस तो लॉर्ड वेल्सली टाइम रो स्टार्ट हेतला सब्सिडियरी अलायंस। तुम जानथिबो सब्सिडियरी अलायंस से कोन थिला कि वेल्सली बेसिकली को टाइम आसले से जाउतले कि नेपोलियन बोनापार्ट इज गोइंग टू अटैक इंडिया एंड द फियर इज देयर कि यूरोप भलिया से माने इंडिया को भी लूज कर देबे। बिकॉज़ तुम जानथिबो हमर टीपू सुल्तान जे थिले मैसूर रो से ऑलरेडी नेपोलियन सहित गोटे पैक्ट भी साइन करथिले, बट दैट डिडंट हैपन। तो वेल्सली टाइम रे तुम जानथिबो एंग्लो मराठा वार 3rd एंड 4th हेतला हला। सो सब्सिडियरी अलायंस बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली सेते कोन थिला कि जो प्रिंसली स्टेट्स मान रहउतले वेल्सली कोन करले कि तुम जगह रे गोटे हमें लाइक ब्रिटिश कंटिजेंट रखिबो जे कि तुमको प्रोटेक्शन देबे, डिफेंस देबे एंड बट तुम तांको खर्च बुझिबो एंड विदाउट कंसल्टिंग ब्रिटिश यू कांट लाइक व्हाट कांट गो विथ वार। तुम युद्ध कर परिबनी कि को अन्य राज्य सहित पड़ोसी राज्य सहित कि का सहित तुम किछि प्रकार ट्रीटी और अलायंस साइन कर परिबो नाही। तो बेसिकली जो इंपोर्टेंट थिंग्स थिला डिफेंस काइंड ऑफ थिंग्स सेटा को पूरा ऑलमोस्ट ब्रिटिश अंडर रे आछे थिला। सेटा जो जहा थिला लॉर्ड डेलहाउसी जेता आसले 1848 टू 1856 भितरे से गोटे नवा स्कीम नि आसले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तुम जानथिबो कोन थिला सेतरे जदी तुमरो बेसिकली जे भी प्रिंसली स्टेट थिबे जे राजा थिबे तांकर जदी के निजर संतान नथिबे देन आफ्टर हिज डेथ दैट विल कम अंडर द ब्रिटिश रूल। ओके, तो सेटा ब्रिटिश अंडर को पळी आसीबो
एंड ता सहित भी जदी तुमे आ गोटे कारण थिला कि तुमे जदी गवर्नेंस ठीक से करन तो सेटा भी पळि आसो ब्रिटिश अंडर रे तो ए डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स अंडर रे बहुत बड़ बड़ राज्य कोन हला प्रिंसी स्टेट आसी गला ब्रिटिश अंडर को तो ब्रिटिश मान को जदी आसला सेही ठिकार जो राज्य रो देउथिले सेतिकार माने राज्य कर्मी माने राजा माने कि सेतिकार जो बेसिकली यू कैन से नागरिक माने से माने यांको प्रति बहुत राग गुस्साई हेथिले हला एंग्री हेथिले तो डॉक्टर लास्ट अंडर तुम जानथिबो सातारा 1848 आसला तापर जयपुर संबलपुर ऑफ ओडिशा आल्सो जा पाई कि वीर सुरेंद्र साहेब भी परे स्ट्रगल करिवे जोडा कि हमें लाइक वीर सुरेंद्र साहेब परे गोटे वीडियो बनेछि यू कैन सी इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा से तार प्लेलिस्ट देखि पारियो तो सातारा जयपुर संबलपुर बागत उदयपुर झांसी नागपुर हला तो ये बढिया बहुत इंपोर्टेंट स्टेट्स जेमति कि तुम जानथिबो एट लास्ट आल्सो इट विल कम योर अवध अवध आल्सो डॉक्टर लास्ट अंडर आसीवनी बट डेलहाउसी कोन करबे लाइक कहबे कि तुम गवर्नेंस ठीक से करनो तो सेहि पई से ताको नै आसीबे ऑलरेडी तांकर ब्रिटिश कंटिजेंट थिला ऑलरेडी तांकर इकोनॉमी वीक हेतला तांकर डिफेंस वीक हेतला तो इट्स वेरी इजी टू कैप्चर दो स्टेट्स हला बिकॉज़ साने ऑलरेडी सब्सिडियरी अलायंस रे रहउथिले तो सब्सिडी अलायंस रो नेक्स्ट पार्ट हला डॉक्ट्रिन लैब्स ओके तो दीटा हला मेन कारण थिला पॉलिटिकल कॉजेस okay you can also remember the states but here you don't have to write I just said those things ta mane kono subsidy alliance mane kono doctrine of labs mane kono okay so doctrine of labs subsidy alliance then economic causes heavy taxation we know तीनटा important taxation model thila zamindari riyatwari and mahalwari hela zamindari riyatwari and mahalwari तो ता विषय भी ऑलरेडी डिस्कस करछि मॉडर्न ओडिशा हिस्ट्री रे तमे ता विषय भी तमे देखि परियो जमींदार रे जेमति कि मेनली तमर बेंगल वाला ओडिशा वाला रीजन थिला जमींदार मान से तम होतले ब्रिटिश मान को दउथले किछि टैक्स आ सेही टैक्सेस माने कलेक्ट करथले पीजेंट्स मान कोटू माने चासी मान कोटू हला बेसिकली 10 by 11 पार्ट्स मान रखथले 1 by 11 सॉरी 1 by 11 तो जमींदार मान रखथले 10 by 11 दे दउथले कागो ब्रिटिश मान को रियोतरी कोन होतला कि जोडा कि मद्रास वाला रीजन थिला मुनरो थॉमस मुनरो ताको इंट्रोड्यूस करथले राइट एंड तो सेटर कोन थले कि डायरेक्टली माने ब्रिटिश माने कलेक्ट करथले पीजेंट्स मान को टैक्स हला इंटरमीडिएट जेमति जमींदार माने रहथले से माने एडी नथले महलवारी माने गोटे महल्ला माने गोटे प्रकार विलेज हॉल विलेज गोटे टैक्सेशन साने कलेक्ट करथले जोडा कि माने तमर यूपी वाला रीजन में होतला हला तो एटा हेवी टैक्सेशन इन वन ऑफ द मेजर रीजन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स डिस्ट्रॉयड सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन तो बेसिकली जतले सब्सिडी अलायंस की अन्य प्रकार अलायंस रे कोन प्रिंसली स्टेट्स किंग माने वीक हे गले से माने जो जेमान को बेसिकली दउथले इकोनॉमिकल सपोर्ट लाइक द जेमाने किछि प्रकार लाइक हैंडीक्राफ्ट्स काम करथले हला तो से माने लूज करि गले तांकर इकोनॉमी तो से तांकर बर्डन भी माने जो लैंड ऊपर बर्डन बहुत बढ़ी गला एंड ऊपर लैंड रे कोन बहुत टैक्सेशन होतला तो मेनली एग्रीकल्चर लाइक 90% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थिले दैट टू एग्रीकल्चर वाज अ कंप्लीट लॉस क्योंकि टैक्सेशन तो बहुत हेवी होतला प्लस तमर जति प्रकार नरो किछि प्रकार ड्रॉट होतला कि किछि प्रकार नेचुरल डिजास्टर होतला किछि पॉलिटिकल सपोर्ट मिलुतला जोडा कि आगरो बिफोर ब्रिटिश दे यूज्ड टू गेट बिकॉज़ तांकर मेनली रूलर माने वीक हे गलेनी तो some areas are directly under British control some are not indirectly control हला तो सेने कोडी सपोर्ट मिलनी तो सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन हे गला हला बिकॉज़ सब प्रकार जो रॉ मटेरियल्स थिला ब्रिटिश माने कोन कलेक्ट करथले इंडिया रु आ जो फिनिश प्रोडक्ट था माने ब्रिटिश से बनै की कोनी आनी की इंडिया रे बेकुथले तो इट वाज अ ह्यूज डिजास्टर skewed tariff policy हला skewed means non transparent you can say tariff policy किछि प्रकार लगोथले माने you can say like british मान को पई पूरा माफ थिला and जो indigenous workers laborers or you can say the handicrafts जे माने करथले मैन्युफैक्चर वगैरह तांको बहुत प्रकार लाइक टैरिफ लगाउथला तो पॉलिटिकल कॉज इकोनॉमिक कॉज देखले देन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस huge corruption issue there because जो British India से directly British government तो रूल कोन होतला British East India Company जो थिला English East India Company कैन से तो सेटिकर जो थिले तांकर जो वर्कर्स माने जो ब्रिटेन रो आस्तले से माने कोन करथले तांकर पर्सनल ट्रेड्स भी करथले बिकॉज़ से माने ऑलरेडी ट्रेडर्स रूलर्स हे गले तो ट्रेडर्स जो रूलर्स ले से माने कोन बहुत प्रकार जति प्रकार सुविधा ही परिबो से माने निजे करथले तो सेटा ऐसे पैसाटा भी इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट को जानोतला से माने धनी होबा लागिले हला इवन सम स्मॉल सोल्जर्स एंड ऑल पोर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वाज देयर हला तो इस कारण थिला एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस सोशल कॉजेस कोन सोशल कॉजेस वेरी इंपोर्टेंट एबोलिशन ऑफ सती 1829 जोटा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का टाइम रहितला तो व्हेन along with political economic and administrative causes social causes was to happen so it was a huge like you can say तमर जो लोकल पीपल्स जो इंडिजिनस पीपल थिले से माने बहुत
तांकर बहुत एंगर सृष्टि हला तांको भितर हैला कि से काहे कि हम सोसाइटी कल्चर को कोन इंटरफेयर करछन्ती तो सती ऑल्दो दीज आर द गुड स्टेप्स बट बिकॉज़ दैट टाइम द रेनेसा डिडंट हैपन माने से टाइम रे तांकर इंटेलेक्चुअल नॉलेज सते ग्रो कर नथला तो से माने एको सपोर्ट कर नथले हैला एक्सेप्ट सम एजुकेटेड इंडियंस तो आबले सते तुम जानथो लॉर्ड विलियम बेंटिंग एंड राजा राममोहन राय वर इन्वॉल्वड 1829 रे हितला देन लेक्स लॉकी एक्ट कोन थिला बेसिकली जे माने सेटल कन्वर्सन भी स्टार्ट हेतला जेम तुम जानछो 1813 एंड 1833 चार्टर अनुसार जो चर्च मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरी माने आसे लागितले भारत रे ऑल्दो दैट डिड गिव एजुकेशन से माने कोन कन्वर्ट भी करिया स्टार्ट करथिले तो जो आगरो रूल थिला कि जदि तुम कन्वर्ट करथु हाउथु हिंदू रो क्रिश्चियनिटी एंड कि इस्लाम एंड ऑल प्रॉपर्टी ऊपर ज्यादा किछि रहनथला अधिकार लेक्स लोसी एक्ट अनुसार कोन हेगला तांको प्रॉपर्टी अधिकार मिलवा स्टार्ट हेगला सो दैट आल्सो एंगर्ड द इंडियंस देन विडो रीमैरेज एक्ट 1856 जोटा कि तमरो ड्यूरिंग द लॉर्ड डेलहाउसी एंड कैनिंग टाइम रहितला हला सेथरे तमरो इन्वॉल्व कि विडो रीमैरेज एक्ट के नथले ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहते या ओके these are the social causes and military causes religious reasons versus service rules तो जानथिबो कि सेतले कन्सिडर करला जदि तुम देश बाहर को समुद्र पार करि जाउछो तने तुम रिलीजन नष्ट हो जीवो दिस थिंग्स आर आल्सो देयर तो सेतले जे माने ब्रिटिश आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी रे जॉइन करथले ता समान को लाइक फॉरेन लाइक अफगानिस्तान वार की भूटान इवन नेपाल योर बर्मा एसो युद्ध करया पड़थला तो समान को रिलीजन नष्ट हो जीवो बोली दैट थिंग वाज देयर सर्विस रूल्स आर आल्सो वेरी indiscriminatory or indiscriminatory you can say discriminatory basically जे माने फॉरेन ओरिजिन थले समान को काफी सैलरी अधिक मिलथला देन द इंडियन ओरिजिन पीपल and even foodings other things also there the service जो मिले benefits and all so there is also that time one thing happened general service enlistment act 1856 by lord canning जो तो कोन थला कि तुम प्रकार गोटे डॉक्यूमेंट साइन करबो कि तुमको although you are serving under the english east india company यदि से कोडी वार फॉरेन कंट्री रे लडुची तुम सेठी को जीवा बाध्य हला डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स देन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 पोस्ट ऑफिस एक्ट कोन हला कि आगर जो माने जो आर्मी ने जमा सर्व करथले इंडियन माने से माने किछि लेटर वगैरह लिखथले किछि स्टाम्प ड्यूटी पड़नथला तो अंडर दिस एक्ट पोस्ट ऑफिस एक्ट सान को किछि ड्यूटीज भी लागिला सो दिस आल्सो एंगर्ड द सिपोइज मेनली हला एंड आल्सो आई सेड दैट थिंग अंडर द पॉलिटिकल कॉजेस the subsidiary alliance and the doctrinal lapse जेमति कहली कि अवध वाज ए बिग स्टेट इन यूपी लखनऊ वाला एरिया जो थे कि काफी सारा सिपाही माने आसुतले से एरिया को जो लॉर्ड डलहौसी कोन करले लाइक कोन माने लीगली नो इलीगली कैप्चर करले कैन से बिकॉज़ तांकर से राजाकर ऑलरेडी बहुत सारा संतान थिले जे माने कि लाइक डॉक्टरिनल लैप्स अनुसार से राज्यटा आसीवा नथिला अंडर ब्रिटिश रूल बट अराजकता चली छि कहि कि मिस गवर्नेंस से माने कोन कले ब्रिटिश माने कैप्चर कर देले सो दैट आल्सो एंगर्ड द सिपोइज देन व्हाट इज द इमीडिएट कॉज जोटा कि समस्त जानथिबो मंगल पांडे वाला स्टोरी ग्रीस कार्टिज ऑफ एनफील्ड राइफल गोटे नुवा राइफल से इंट्रोड्यूस होला एनफील्ड राइफल ओके तो सेतरे कोन थला ग्रीस कार्टिज थिला जोटा कि तुमको चबे की दांतरे तको काढी की बारूद पुरै की तको मारिया तो गोली मारिया पड़थला जे तुमे देखिथियो मंगल पांडे मूवी सेतरे देखैछि से जिंसडा को ओके तो जो कार्टिज थिला जो थे कार्ट्रिज तो सेटा कोन थिला जो ग्रीस जो थिला कार्ट्रिज जो ग्रीस जो चमड़ा कवरिंग थिला बेसिकली दैट वाज रिपोर्टेडली मेड अप ऑफ बीफ एंड पोर्क तो बीफ सब जानथो जोड़ा कि टाबू फॉर द इंडियन हिंदूज एंड पोर्क टाबू फॉर द मुस्लिम्स ओके तो वो फॉर दोटा जो मेजर रिलीजियस थिला रिलीजन थिला जे माने कि रहउथले आर्मी रे अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी और सिपाही ता जे सिपाही कहै होतला सिपाही और सिपाही तो से माने को पई दीटा ए जिंसडा टाबू थिला बोथ फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स तो से माने कोन कले एटा गोटे इमीडिएट कॉज हला फॉर द व्हाट सिपाही म्यूटिनी देन द इवेंट्स विल हैपन मंगल पांडे इनिशियली बाराकपुर रे ताको ये करिवे विद्रोह करिवे देन other things are also there start hobo tomar abadru start hobo then your rani jansi rani lakshmi bai was there Nansi Rani Lakshmi Bai then Kunwar Singh all these things Tantiya Tope many leaders will be there so these are the events so the events were there then you have to write all the things then consequences you will know ki within 1 to 2 years they will get defeated then 1858 tomorrow kon hojibo transfer hojibo from the jo governance or administration you can say that will get transferred from the English East India Company to the directly under the British crown hala then good governance act will come 1858 then other things will happen okay so this is the first questions scope okay one page you have to write okay next
examine the circumstances leading to the formation of Indian National Congress in 1885. तुम जानते हो 1885 रे Indian National Congress was formed in India, जोड़ा फर्स्ट सेशन कोड इतला मुंबई रे इतला, and founder was A.O. Hume, Allen Octavian Hume. Okay, here the question was that examine the circumstances, कौन circumstance थिला जहां द्वारा कि Indian National Congress फॉर्म हैला हैला, तो फॉर्मेशन पर्यंत हमें जीवा कौन केमती कौन कारण थिला, रीजन थिला कि INC फॉर्म हैला हैला. So it is a historical causes देखे one page. You don't have to write all these things, just to know what did happen before those things. जब हमें देख लो 1857 में सिपाही म्यूटेशन हैला, then directly the administration came under the British Crown. Okay, British Queen under आसीगला, and your viceroy basically जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आगो थिले ताको कहला viceroy. Okay, and the secretary of state post also was created. All these things are happened. Then 1861 ने गोटे आसीबो tomorrow Indian Council Act 1861. Okay, then before 1885 पर्यंत किछि भी like relaxation हेई नथिबो administrative model रे, so these things will happen. Then INC was a region, then जहा जो होगी future रे किछि relaxation दिया जिवो, or you can say inclusive government create हबो. The first endeavor to forge an all India link was made in 1851 by British India Association when it tried to open branches in the other two, that is Bombay and Madras presidency. तुम जानते हो कि British India time रे तीनटा major cities थिला और presidencies से टाइम रे कोआ थिला Bombay, Madras and Calcutta. Okay, so the first जो गोटे all India link पाई चेष्टा हला 1851 रे थिला, before 1857 ताको British India Association कोआ थिला. जो जेतरे कारण कोन हला कि सेमान गोटे व्यू थिला कि जॉइंट पेटिशन पकेबे, तो तुम बेसिकली यूनिटी इज फोर्स, यू कैन से. तो जदी इंडिविजुअली तुम किछि पेटिशन पकोजो तार एते फरक पड़िबनी, बट जब जॉइंट पेटिशन पकोजो तार मे बी किछि इन्फ्लुएंस रहिबो. सो दैट वाज द लाइक रीजन कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन स्टार्ट हला 1851 रे, जोते कि सेमाने जॉइंट पेटिशन देले को ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द ईव ऑफ रिन्यूअल ऑफ कंपनी चार्टर. तो जब जानते हो 1853 रे every 2 years used charter act used to get renewed. तो 1853 हबार थला रिन्यू, सेमाने से 1851 रे गोटे जॉइंट पेटिशन पकेली कि you should have some inclusive government. Then on the occasion of Delhi Durbar in 1877, the Indian journalists who were invited to the event sorry, so 1877 रे गोटे कोन हला Delhi Durbar 1877 हला, जोद्रा कि ब्रिटिश क्वीन आस्थिले. तो सेते गोटे सब प्रकार इंडियन जर्नलिस्ट पे आस्थिले, सेते तमर ऑलरेडी बहुत प्रकार लाइक न्यूज़पेपर सब रीजन स्टडी हितला, तो सेमाने गोटे जगह एकत्रित हेले. So they formed a native press association, then elected Surendranath Banerjee, the editor of Bengali. तो बेंगली नाम गोटे न्यूज़पेपर थिला, तार एडिटर थिले कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी. तो तांको सेमाने फर्स्ट सेक्रेटरी बनेले कहार नेटिव प्रेस एसोसिएशन रो. Resolved to meet once or twice every year to discuss issues related to press and country. Okay, so two things we have seen: first British India Association, then we had seen the native press association, जो कि सब प्रकार जो region रो press जो थिले editors and founders, they got together in 1877 and they resolved that सब वर्ष जाने मिलिबे at least twice, once or twice, discussion करियो press and country related जहाँ भी issues थिवो. Okay, and particularly important are the years between 1883 to 84. Why? When what happened this times, local association in the presidency towns to were forging towards unity. से माने unite बाबू धीरे-धीरे try करतुले. During the same time, what happened? 1883, the Indian Association organized a national conference in Calcutta and scheduled. So 1883 रे गोटे हला event national conference Calcutta रे, and सेमाने गोटे schedule कले कि December 1885 रे गोटे आउटे करिवे कोन conference, जोते कि सब प्रकार region रो लोक आसीबे. तो एको गोटे कोन कहइबो बूस्ट देला कोन इंडियन मान को द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. तुम जानथु एई टाइम रे के थिले तमरो गवर्नर और यू कैन से वाइसरॉय योर लॉर्ड रिपन. तो ताको प्रोग्रेस लॉर्ड लिटन जी की बहुत बार कंट्रोवर्शियल बिल्स आनिथिले. लॉर्ड रिपन वाज वेरी गुड गवर्नर जनरल, यू कैन से इन टर्म्स ऑफ इंडिया, बिकॉज़ ही डिड मेनी जो छमन लिटन जो सब कंट्रोवर्शियल बिल्स आनिथिले, जेमति कि तमरो प्रेस रिलेटेड एक्ट्स एंड योर like age वगैरह कमे दवा for your Indian civil service हैला. तो ऐसे जिंस को से हटेले. then Ilbert Bill controversy कोन हला कि based on Ilbert Bill he said कि जो British origin और European origin जमान लोक थिबे जदी सेथरो किछि क्राइम करिवे ता पूर्व थिला कि only British judge माने तांको कोन ट्रायल करि पारथले, but Ilbert Bill कहला कि no Indian judges can also do.
but this सेइत्रे कोन हला जो ब्रिटिश ओरिजिन और यूरोपियन ओरिजिन लोक माने थिले से माने प्रोटेस्ट करे स्टार्ट करले, सो इल्बर्ट बिल couldn't get passed. ओके, तो एथु देखले कि इंडियन में रियलाइज करले कि यदि तुमे मास स्केल प्रोटेस्ट करछो देन इवन द बिल्स कैन लाइक बिल मन को तुमे रिपील करि परियो, इवन सम बिल तुम जोडा कि तुम पई बेनिफिशियल थियो तुमे पास भी करि परियो. So this Ilbert Bill controversy which happened in 1883-84 during the time of Lord Ripon, this depend the desire of national unity. Okay, तो सेही पई गोटे जो तमरो इंडियन कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस हला सेन कलकत्ता रे देखा करी कि कहले कि हमें 1885 डिसेंबर रे आउथरे मीट करिवा. The final step to the idea of national unity was given by a retired English civil servant A.O. Hume. Okay, so you can start the answer from this because the introduction should be 2 to 3 lines. Okay, you can't write all these things because, but I wanted to create some basic idea before this question what happened. So जदि एवळे किछि क्वेश्चन पचारथियो भी ए स्कोप रो तो तुम आंसर दे परियो. Okay, so the retired English civil servant was Allen Octavian Hume. What he did, he became the mediator to unite all the like leaders from different regions of India. Okay, so who mobilized leading intellectuals of the time with their cooperation organized the first session of the Indian National Congress in Bombay in December 1885 with 72 delegates. Hala, initially it actually planned itla Pune ra pai, but because that time plague or cholera or something, plague I think that say time re vyapi thila kodi Pune re, so that it shipped to Bombay. So first INC conference happened in Bombay December 1885 jaha go organize korle ke A.O. Hume je pe taku koha jaye founder of INC, but he was not the first president of INC conference. That was who? Umesh Chandra Banerjee. Okay, so this happened. So jo the 72 delegates asle from all over India. So what are the views or regions regarding the formation of INC? So तार mainly दुईटा important view आसे जोड़ा कि basically the scope of the answer है ना. Safety valve theory or conspiracy theory. First, that is safety valve theory or conspiracy theory. What is that? There is a theory that Hume formed the Congress with the idea that it would prove to be a safety valve for releasing the growing discontent of the Indians. Basically, तो जेमती कि basically मैं कहले कि 1861 परे almost 30-40 years has passed, no relaxation happened or no kind of inclusive government including the Indians did happen. एमती किछि हेइ नथला. तो जो धीरे धीरे जो because of all these things जो discontent start होतला और political consciousness develop होतला because of education, modern education, all things, middle class धीरे धीरे create होतला. तो सेमान को जो discontent अछि ताकू रिलीज करिया पई गोटे सेफ्टी वॉल्व दरकार थला जो पई सने गोटे आईएनसी बनेले के A.O. Hume and सेतरा के थिला your viceroy, that time the viceroy was your Lord Dufferin. Lord Dufferin was the viceroy. Okay, so Dufferin and your A.O. Hume मिसिकी सेफ्टी वॉल्व बनेले जेटा कि ना देले से माने INC Indian National Congress माने ना देले 7 names obviously, but that was the like motive. Okay, this was told by whom? We'll see here. So ता मैन लिखला तो बेसिकली जदी एई जिंसटा न थांदा कोन थांदा डायरेक्टली जो तांकर जो रागोडा थांता आस्तांदा कोडी की डायरेक्टली टू द ब्रिटिश. So that's why this thing happened. So to this end he convinced Lord Dufferin, the then Governor General of India or Viceroy you can say, not to obstruct the formation of Congress. तो से कांग्रेस टाको बनिया पई माने तांको मना माने कांग्रेस टा जेमति कि बनिया रे तांको କିଛି obstruction न हुए तांको कन्विंस कले के whom? A.O. Hume. The extreme leaders like Lala Lajpat Rai believed in the safety valve theory. Even the Marxist historians conspiracy theory was an offspring of the safety valve notion. So this theory was originated from William Wedderburn's biography of Hume. तो William Wedderburn गोटे कोन करथले Hume को बायोग्राफी लिखथिले जोडा कि पब्लिश थिला 1913 ने सेइथले कि सेटा को से डिस्कशन करथले कि INC रो मेन पर्पस थिला कि टू वर्क इट एज ए सेफ्टी वाल्व. ओके, तो William Wedderburn's biography of Hume से लिखिथले जो सेथरे से सेटा को मेंशन करथले. दिस इज द सेफ्टी वाल्व थ्योरी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी. तो जोडा सेफ्टी वाल्व कहउचंदी कि William Wedderburn सेटा को मार्क्सिस्ट माने कोनती कॉन्स्पिरेसी थ्योरी. Okay, now what is the second philosophy or you can say second point why it was started? That is called organization for expression of Indian demands. So modern Indian historians dispute the idea of safety valve. So modern Indian historians माने कोन कहउचंदी कि in their opinion the INC depended the urge of the politically conscious Indians. तो से टाइम में धीरे धीरे जो इंडियंस माने जो लाइक एजुकेटेड होक लागि थिले तो तांकर जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस स्टार्ट हितला. So that is the reason this INC was started. So that is why saying the INC depend the urge of the political conscious Indians to set up a national body
to express the political and economic demands of the Indians. So main कारण थिला कोन political and economic demand of Indians को demand को पहुंचे पाए to the British government. Historian Bipin Chandra observes the early Congress leaders instead used Hume as the lightning conductor. ସେମାନେ जोटा सेफ्टी valve कहउछंदी. Bipin Chandra said that जो early leaders माने थिले इंडिया रो they instead although they knew कि ସେମାନେ गोटे सेफ्टी valve बनिया को चाहउछंदी, but they saw that initially it is okay, let them think that they are creating the safety valve, but we will use him as the lightning conductor or the catalyst to bring together the disparate nationalistic force even if under the guise of this safety valve. तो safety valve guise रे हमें केमिति हो ना काहे कि सब प्रकार सब इंडियन जो अलग अलग रीजन जो लीडर्स होछन ताको केमिति हमें गोटे एकत्र आनी परिबा. Okay, so that was the thing. So two theories are there. One is the safety valve theory or conspiracy theory, and the second one is the lightning conductor theory. Okay, so lightning conductor kiye कहले Bipin Chandra, historian. So what are the major objectives of INC? So this like this two theory, if you will mention, the scope of the answer is finished. Now the other things we will study what are the major objectives. Okay, to promote the process of national building and to create Indian people. So remember this line by line. Okay, to promote the process of national building and to create Indian people. So basically at that time we are not united, we are separated. Some are Bengalis, some are Tamils, some are Marathis, all people are there, regional things. So they have the regional ideas are there. So they are not united. So that is the motive to kemiti prakar gote national consciousness start among the people of India. When there will be unity, then only they will succeed. So 1857 जो थी सिपाही mutiny, that is तारो जो failure main reason कौन था? This is the reason because people are not united. Mainly the सिपाही mutiny was concentrated on the northern and eastern region. The western and southern region is very much peaceful. Even they helped the British to crack down this mutiny. Okay, so this is the thing, to promote the process of national building and to create Indian people. That is the major objective of INC. And what are the other things? Development and consolidation of sentiments of national unity among people, irrespective of religion, caste, and province. That time people are separated by religion, caste, province, all the things. Even these things are there today, but that time it was too much. Okay, religion, caste, province, and like class also you can say. To create a forum through which the politically conscious people of different regions of India could unite. So although people from different regions are politically conscious, becoming conscious, they are unable to unite, and united voice was lacking. So INC gave that united voice. And then to politicize issues and educate the people in politics. Okay, to politicize issues and educate the people in politics. Forward-looking politics and economic program, because that time the demand was not Swaraj or Purna Swaraj. Independent was not the demand. Moderate phase was there. So they used to demand for some economic advantage, political advantage for the people of India. Like politically, हमको Indian Council रहे तो हमको reservation दियो, like, and economically हमारा जो taxation वगैरह काम करो. These are the demands basically. Education दियो. To form an all India leadership group, then to develop and propagate an anti-colonial nationalistic ideology. Okay, that will happen in the later phase. Initially, it was not the thing, because that time the leaders used to think that under British rule we are what? We are progressing. That was a like mental setup. Okay. So conclusion, thus the objectives of INC, Indian National Congress, are not mere critique of British policies, but forward-looking program for improving conditions of Indians. Even though moderates were not successful in their endeavor to lay the foundation of the mass-based independence struggle with INC formation. Now let's go to the third question. Discuss the salient features of Montague-Chelmsford reforms. So this word salient features many times you will see in the question. So salient features means what? Most important ones. Okay, don't write anything and everything. The most important ones you are asking in. Okay, so Montague-Chelmsford reforms कौन important things is asking. But here we will discuss a little more. Okay, so you take the important points and put it in the answer. Based on the August Declaration of Edwin Montague. So Montague, who was the Montague? He is the then Secretary of the State for India. जेमती को कहथि कि 1857 पर जो 1858 गोटे आस्थिला गुड गवर्नेंस एक्ट, तो से अंडर कोन हितला कि Secretary of State for India post was created and the Governor General को of India को कहा गला Viceroy. तो किछि भी जो या पर आसीबो किछि भी प्रकार acts, okay, that
the main contributor for that things will be the viceroy, the then viceroy, and the secretary of state. Okay, so time then they have the Morley Montague reforms, and this is the Montague-Chelmsford reforms. So Montague is the secretary of state, and Chelmsford is the viceroy of that time. Okay, viceroy of India. So August Declaration तुम जानते हो कि 1914 रो 19 पर्यंत तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 1 हितला तो से टाइम रे इंडियन मानकर सपोर्ट because that time the main British Indian like British army ro main लोक थिले किए your Indian British Indian army. Okay, they used to come to different regions in Europe and fight. Okay, although Indians were not directly involved because of Britain or UK, Indians got involved on the territory, the colonies of Britain. So based on the August Declaration of Edwin Montague, the then Secretary of the State for India, which was declared on August 20, 1917. So se August Declaration करथले जोथरे कि to gain the support, to garner the support of Indians during the World War I, the want for reforms came in 1919. So August 20, 1917 से किसी declaration करथले जोटा कि नाहला August Declaration because of that date, and he said that these things will come in future if will support us in the war. The Secretary of the State Montague and the Viceroy Lord Chelmsford, together with some eminent British civil servants and Indian politicians, chalked out a reform scheme, jahan naam called Montague-Chelmsford reforms, on the basis of which the Government of India Act 1919 was drafted and came into force in 1921. So August Declaration and your Montague-Chelmsford reforms, jaha year ki kon hala tomra Government of India Act 1919 asla. So other Montague-Chelmsford reforms is almost same to the same as Government of India Act 1919. तो सही तरह जमाने से नियम देखिए तुम्हारा एबे भी किसी बिल पास है initially it gets passed in the cabinet, then it goes to the parliament and that get passed it. So almost जो cabinet रे जहाँ भी pass हुआ सेटा almost parliament रे pass ही ही जाए. So similar things you can say. And when it came to force in 1921, the sole purpose of this act was to ensure Indians of their representation in the government. Okay, so basically Indian man को representation जोड़ा कि basically from 1885 onwards, which was the demand of the INC, but they get some like relaxation. Initially they get in 1909, some they get in 1992 and 1909 जोड़ा कि तुम्हारा Morley Minto reforms से time रे भी किसी मिलता relaxation. Then again it happened in 1919 and finally it will happen in 1935 before independence. So the sole purpose of this are to ensure Indians for their representation. So August Declaration जो Montague करथले 1917 रे सेतरे कोन कीवर्ड थला. He said that there will be participatory governance, means Indians participants will be there. Then second is decentralization of the administration. Rulers must be, third was this, rulers must be answerable or responsible administration to their subjects. Okay, so rulers must be answerable to the subjects. The rulers के थे Europeans or British, Europeans or British. So they should be answerable to the citizens or the subjects, that is the Indians. And participatory governance will be there. Means there will be some indirect election will happen. Okay. Now, what are the salient features? So here you take 1-2 points for the introduction, but the scope of the question is what are the salient features? So there will be some we can say changes in the central government and state government structure. Central government, what the key word is bicameralism. Bicameralism was introduced with the Council of State, the upper house, and the Central Legislative Assembly, the lower house. Bicameralism means what? There will be 2 houses. Okay, bicameralism. The subjects under administration are divided into 2 lists, central and provincial. So जो subjects रहते administration है ताको 2 प्रकार divide करते हैं गोटे है central subjects and provincial subjects. जेमती अबे हमर state list अछि, union list अछि, concurrent list अछि, similar kind of thing. So central and provincial. In the Viceroy Executive Council, 3 members out of 8 were to be Indians. है ना 1909 रे तुम जानते हो जणे ही थिले Indian like तुम्हारा Morley Minto reforms अनुसार and according to this there will be 3 members out of 8 will be Indians. The Central Legislative Assembly was to have elected majority but no control over the ministers. The Viceroy was allowed the veto in form of the certificate procedure for pushing the rejected bills. So although there was relaxation or inclusive government, the much power used to remain with the British or the Viceroy. The Central Legislative Assembly was to have elected majority but no control over the ministers. Minister ऊपर किसी control रहबनी. Viceroy veto करि परिबे. The legislator under the new reforms could now ask questions and supplementaries. जेमति जानथि 1909 रे कोन होई लागि सेमाने supplementary पचारि पानथले. Only they used to ask questions, but here supplementary पचारि परिबे. Then pass adjournment motions, vote a part of the budget. But 75% of the budget was still not votable. So only 25% was votable.
75% is not. Then communal representation and reservations were considerably extended, जोटा कि आगुरो only Muslim मान को दिया इतला 1909 रे. Now the reservation extended to 6 were to granted a separate electorate. Seats were reserved for non-Brahmins in Madras, and deprived classes were offered nominated seats in legislatures at all levels. So he was saying seats were reserved for non-Brahmins in Madras. So Madras tomar jo thila region basically, and deprived classes were offered nominated seats. So this you don't have to write. This is not a very like important thing. Okay, bicameralism we saw. Bicameralism is the most important thing. Okay, silent feature. And we also saw keyword executive council 3 out of 8 are Indians, and the subjects were divided into central provincial. These 3 points you can write. This is the important things. Next we'll move. Although women were not enfranchised, the act did provide some concession by allowing the provincial councils the freedom to choose to give Indian women the right to vote. Currently India have the so 18 years upre jeman thibe samase vote kari paribe hela, but that time it was not used to their women man को emphasize किया करनी, किंतु जो बिल कौन कहला जो एक्ट कि प्रोविंस माने चाहेले वुमेन को रिजर्वेशन दे परिबे कि ସେମାନେ vote करि परिबे, vote ପାଇଁ, not reservation in the council and things. That thing was not there. ता मान में जो वुमेन माने छै परिबेनी, वुमेन माने भी परिबे members, but the reservation were that कि प्रोविंस माने चाहेले provincial council वुमेन मान को sorry right to vote दे परिबे. ठीक पानी पी लो. Next, the declaration by Montag was given a definite legal shape. जो August declaration थी in the form of preamble to the act. So the Secretary of State for India was now to be paid by the British Exchequer. Yeah. So this is important point. Next, provinces diarchy. So bicameralism and diarchy, these two things you have to surely remember. So bicameralism was introduced in center, and diarchy was introduced in provinces. What is diarchy? So जेमती हम ऊपर देखलु कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जति की प्रकार सब्जेक्ट्स थिला ताकू दीपक डिवाइड करगला सेंट्रल एंड प्रोविंशियल. तो प्रोविंशियल थिला सेटा को पुनी डिवाइड कर दियागला. डिवीजन ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू ट्रांसफर्ड to ministers responsible to the legislature and reserved for governor and his executive council was introduced in the province. So diarchy was introduced in the provinces. तो दी प्रकार कर दियागला ओडला ट्रांसफर्ड ओडा की जोडा की जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होला सेतरे मिनिस्टर माने रेस्पोंसिबल हेबे टू द लेजिस्लेचर, बट जो रिजर्व अछि सेटा को governor and his executive council setre they will not reserve subjects that is not responsible to the provincial legislature. So reserve subjects mainly important jinso thila jemti law and order, finance, land revenue, irrigation etc. Baki transport thila kon transport subjects legislation include education, health, local administration, industry, agriculture. So to target to it ke like kamjuriya subjects thila hela. So mainly these things are there. Then the governor general was chief executive authority and had control over the subjects reserved for provinces. He could restore cuts in grants, certify bills rejected by the central legislature, exercise veto powers, and issue ordinances. So these things are there. So these are not very important points, but you can just read these things. The power of the members of the central and provincial legislature were increased. Short notice questions and supplementary questions could be asked. The legislative council could legislate but not needed governance assent for its implementation. The provincial governors too had veto and certificate powers. तो एडा तो बहुत प्रकार हमें पॉइंट देखलु, बट मेन पॉइंट सैलिएंट फीचर्स जति कहबो तमर डेटा जिंस रहला निहाती तमन निहाती लिखियो सेडा दैट इज bicameralism in the center, diarchy in the provinces. Then you write कि हां 3 out of 8 in the executive council of viceroy used to become Indians. Then secretary of state को जो टंका मिला सेटा they will get from Britain, no more from India. And all these things are there. Transport diarchy river regular transport and reserve transport subjects minister man responsible ka ko legislature ko jota ki reserve subject governor responsible, they are not responsible to the your legislature. So these things are there. Then let's move to the fourth question. Assess the role of Mahatma Gandhi in the non-cooperation movement. The non-cooperation movement was launched in 1st August 1920 by the Indian National Congress under the leadership of Mahatma Gandhi. Mass scale movement initially happened during this time, non-cooperation movement. ता पूर्व तुम हेतला गोटे एंटी रोलाट सत्याग्रह हैला. ता पूर्व तो बहुत प्रकार इवेंट हेतला, बट ऑल इंडिया जदी मूवमेंट तुम देखियो गोटे रोलाट एंटी रोलाट सत्याग्रह गोटे हेतला.
Then non-cooperation was the first major event. Under the leadership of Mahatma Gandhi, the whole India came together. So along with non-cooperation, the Khilafat movement also got integrated. Okay, that we'll study here. So start ke 1st August 1920. In September 1920, the Congress session in Calcutta, the party introduced the non-cooperation program. The period of the non-cooperation movement is taken as September 20. Oh, this should be 1920, not 2020. Okay, correct it. Okay, this is what this will be. Your text as well. Okay, this is 1920. Recline of 1st August 1922 started to February 1922. Next, your so non-cooperation movement and Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was the main force. So this kind of mistake we should not do. Okay, this is 1920. Huh? Non-cooperation movement and Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was the main force behind the non-cooperation movement. In March 1920, he issued a manifesto declaring a doctrine of non-violent non-cooperation movement. Non-cooperation means असहयोग आंदोलन में यदि पढ़ी थी ओडिया मीडियम में थी असहयोग माने हमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर जे माने काम करछन्ती तार एम्प्लॉइज हले पुलिस your administrative officers, your army and other things, okay, they will not cooperate. So that's a non-cooperate movement. Gandhiji through this manifesto wanted people to what? Adopt Swadeshi principles. Okay, adopt Swadeshi habits including hand spinning and weaving, and boycott the foreign goods. Work for the eradication of untouchability from society. So three things are mainly the manifesto of Gandhiji. That is first, adopt what? Swadeshi principles. Adopt Swadeshi habits like what? Hand spinning and weaving. खुद का कपड़ा खुद बनाओ. Then work for the eradication of untouchability from society so that there will be unity. Gandhiji traveled across the nation in 1921 explaining the tenets of the movement. Even he came to Odisha also, right? 23rd March 1921. Okay. Okay. So beginning of non-cooperation by the repressive measures of the Jallianwala Bagh massacre, 13th April 1919 100 years recently तार centenary पालन करागला. So that was the main reason. So by the repressive measures of Jallianwala Bagh massacre, the denial of justice, Gandhi observed that तो ता पाई गोटे कोन हेतला commission हेतला जोडा जानथिबो, that is what is the Hunter Commission. Recently there was a movie also came regarding this Jallianwala Bagh Udham Singh movie. Okay, you can see that also. So by the repressive measures of the Jallianwala Bagh massacre, जोड़ा कि कौन आ जाए कौन ब्लडी बैसाखी जोड़ा कि इतना कब 13th April 1919. Okay, so that was the main reason why non-cooperation movement was started. And although this major thing happened, but there was denial of justice also. So Gandhi observed that the only effective means to vindicate national honor and to prevent a repetition of the wrongs in future, it is the establishment of Swaraj. Swaraj means your that time they are asking for dominion government, not complete Swaraj, Purna Swaraj. Okay, so Swaraj they are asking self-governance basically. Along with the issues of Swaraj and Jallianwala massacre, so the tinta scope thila mainly non-cooperation movement ro Swaraj, to get the Swaraj, and to correct the wrong of Jallianwala massacre, and Gandhiji to unite the Muslim people also united the Khilafat wrong. जोधे कि मुस्लिम माने कोन डिमांड करथले कि जो टर्की जते से टाइम हारी आइतला जो तमरो ऑटोमन एम्पायर थिला तो सेक्रेटरी जे खलीफा थिले ताकू जेमति तांकर प्रॉपर्टी सुरक्षित रहू. So that was the demand of the Muslims. So to unite those Muslims with the along with the national demand, Gandhiji also supported the Khilafat movement. So Gandhiji had provided support towards the issue of Khilafat wrong to garner the support of Muslims, which was seen as a golden opportunity to unite the Hindus and Muslims. The Muslim League was also decided to give full support to the Congress and its agitation on political questions. But say time कौन कले Muslim League को fully integrate कर देवा थिला. Okay, so that future किसी problem नहीं होता. But that whatever historical wrong happened. What to do? So during the moment, what happened? Spread of non-violence message. Millions of the countrymen stopped their work on that day. That is the 1st August 1919. Non-cooperation campaign was inaugurated.
as a work of their support, as a mark of their support to Gandhiji and an antipathy towards the government. Okay, and even that 1st August, I think, yes, that was the day when your Tilak will left his body. Okay, your then there will be a Tilak Swaraj Fund will be created. Like contribution will happen. There will be so many members of INC all over India. Okay, so that was the thing. So then 13th April 1998 Jallianwala massacre, and tapore tomorrow non-cooperation movement start ହେଇଥିଲା. So Gandhi along with Ali brothers, tomar jo Shaukat Ali hai na, Muhammad Ali, so they are the people who are like many Khilafat movement to lead କରୁଥିଲେ ସେ time ରେ. So Gandhi along with Ali brothers made extensive tours to preach the message of national unity and non-cooperation with the government. The Muslim used to give speeches in temples, and Hindus used to give speech in mosques. So basically this is the first time that mutual cooperation happened between the two major religions in India. Okay, so like the British was really frightened. Then finally boycott of British titles and goods. So basically तमें हमें या पूर्व हमें पढ़ले जो Montague Chelmsford reform 1919 रे, तो British वालों रोटे कौन थिला कि गोटे तांकर you can say nature कि गोटे कौन carrot and stick. So one hand they will give a carrot, and another hand they will give a stick. So basically one hand they gave the Government of India Act 1919, another hand the stick was the Rowlatt Act. जोटा कि तमरा basically Indian माने कि हत्या रखी पारिबेनी तांक लाइसेंस दरकार, and also they can get arrested without any trial for 2 years. So काला कानून दा कहतले like black law कोडा कहतला Rowlatt. Then Rowlatt जेतले Rowlatt सत्याग्रह जेतले करतले से टाइम रे तमरा जालियानवाला बाग massacre हे गला. So then the non-cooperation movement started. Okay, so these things are basically related, like step by step things, so don't get confused. Anti-Rowlatt satyagraha time re hi tomara hitla your Jallianwala massacre. So theta pore basically Gandhi stopped that thing, Rowlatt satyagraha, anti-Rowlatt satyagraha. Then he started, after the Hunter Commission couldn't satisfy the demands of the Indians, or he couldn't punish, that commission couldn't punish the General Dyer or General O'Dyer. Okay, so these things, there are two people. General Dyer was the like who directly ordered firing to the जमाने की बिना हत्या रे एकजुट हेतले कोठी की जालियानवाला बाग जो गार्डन अछि सेठी. And another was the Lieutenant Governor of your Punjab province that time, called Michael O'Dyer, जहाँ को की उधम सिंह गोली करीबे in 1940 after 21 years. Okay, so boycott of British titles and goods. The program of non-cooperation Swadeshi movement started. So the leaders called for accepting Swadeshi materials and boycotting the foreign goods. The program of non-cooperation consisted of a surrender of British titles and honors. Then the Kaiser Hind title was surrendered by Gandhiji. Knighthood was surrendered by whom? Your Tagore, Rabindranath Tagore, right? Okay. Boycott of British courts, legislature, and educational institutions, as well as the boycott of foreign-made goods. People lit public bonfires of foreign cloth. The imports of foreign cloth fell drastically between 1922. Promotion of Swadeshi goods, especially hand-spun and hand-woven khadi cloth. The removal of untouchability and the promotion of Hindu-Muslim unity and abstention of alcoholic beverages. So these are the calls of Swadeshi movement. So Swadeshi movement initially happened during the 1905 your Bengal partition, but in the mass scale it was happened in 1920 non-cooperation movement by the call of Mahatma Gandhi. Then in this movement, along with the Hindu-Muslim unity, students, middle class people, businessmen, peasants, women, etc., also get participated in this nationwide movement. So this is the first question जो था कि चारिटा part थिला हम discuss करूँ. Okay, then we'll come with the second question. Likely will complete the 2016 GS1 and GS2 paper within 10 to 15 days. So please let me know your feedback, if you're liking this discussion, if it is helpful, if you'll like, I need at least 100 comments in the comment section if you want me to continue this series. Okay, so please let me know your feedback. And okay, so we'll stop here.
Yes, I'll just show you where, if you want the PDF, you can get from the Telegram. Some people have joined already this Telegram group. You may be knowing. It's okay. So already I had shared the previously जो जति कि हमें जो materials हम जते in like Odisha history related जति material थिला, so already मैं share कर सारची. You can get from this channel OPSC exam revise with me. You'll get this in the description section also. This channel's link. Okay, t.me OPSC exam revise. You can get this. So I'll share this PDF also with you. You can get it. Okay, and if you want to communicate, because this group, because this is a public group, and I had disabled the your what you can't reply to me in this group. You can directly reply to me. Okay, directly you can ping me if you have any doubt in the YouTube or in the Telegram. In this group you can't ask questions because this is disabled. So I don't want to others get disturbed. Okay, that's why I have disabled these things. Okay, currently 70 members are there. You can also join for further notification, anything. Okay, so we'll stop here. Okay, Hare Krishna, Jai Jagannath.